Hello students. In the first part of Playing the English Gentleman, we did that how Gandhiji was pursuing so many books on dietetics, and he decides to remain vegetarian because there were people who were advocating non-vegetarianism to others. So in this part of the essay, we will see that if he couldn't become a non-vegetarian, what other ways he adopted to get comfortable with English society. Now, I resume the chapter. In the last, we saw that he created a scene in the restaurant by asking whether the soup is vegetarian or non-vegetarian, and his friend was angry with him. So I resume it afterwards. That was the last friendly tussle we had. So that was the only tussle they had. Tussle मतलब थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई बेटे. It did not affect our relation in the least. I could see and appreciate the love by which all my friends' effort were actuated. तो वो इसको लड़ाई नहीं समझते, इसको गुस्सा नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये उनके दोस्त का प्यार था, जो it was his friend's love, which was so he wanted him to settle well in English society. So Gandhiji says that my respect for him was all the greater on the account of our differences in thought and action. हालांकि हमारे विचार और जो काम थे वो अलग अलग थे, बट फिर भी मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था. बट आई डिसाइडेड, नाउ व्हाट ही डिसाइड्स, हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम एट ईज, दैट आई शुड अश्योर हिम दैट आई वुड बी क्लमजी नो मोर. कि मैंने ये निर्णय लिया बेटे कि मैं उसको क्लमजी नहीं दिखूंगा, गंदा नहीं दिखूंगा, बिखरा हुआ नहीं दिखूंगा, ऑकवर्ड नहीं दिखूंगा, ऑड नहीं लगूंगा, बट ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड. मैं बिल्कुल पॉलिश्ड हो जाऊंगा, मैं सलीकेदार हो जाऊंगा किसी तरह से. एंड मेकअप फॉर माई वेजिटेरियनिज्म बाई कल्टिवेटिंग अदर अकम्पलिशमेंट्स विच फिटेड वन फॉर अ पोलाइट सोसाइटी. तो ठीक है, मैं वेजिटेरियन ही रहूँगा, लेकिन मैं बाकी चीज़ें सीख जाऊँगा जिससे आई कैन बिकम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर पोलाइट सोसाइटी. And for this purpose I undertook the all too impossible task of becoming an English gentleman. तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं एक English gentleman बन जाता हूँ, जिसको कि वो कहते हैं कि all too impossible task, because I think an Indian remains an Indian. Maybe Gandhiji thought that an Indian remains Indian, but then you can acquire things like which the Britishers do, or an English gentleman is supposed to do. So it is easier to acquire those things, not difficult at all. So Gandhiji too starts that journey of becoming an English gentleman. Now, first of all, it is the clothes which we notice. If we want to mingle in the culture, we the first thing we notice to think about someone, and in that era, that an Indian Hindu would wear kurta and dhoti, and Sardar would wear a turban. There are so many marks which we assess by looking at a person's dress, that who he is. In those days, at least, differences were so stark. Actually, nowadays everyone wears those Western clothes, so it becomes difficult to differentiate. But in those days, when people were they were adhered to their own culture and their own dresses, their own way of style, so it was quite easy to determine a man's religion even by looking at his dress. So the clothes is the first thing we notice. So here Gandhiji mentions that the clothes after the Bombay cut that I was wearing were, I thought, unsuitable for English society, and got new one at the Army and Navy store. I also went in for a chimney pot hat costing 19 shillings, an excessive price in those days. तो एक hat भी उन्होंने लिया. Not content with this, now this was not enough for me. I wasted 10 pounds on an evening suit made in Bond Street, the center of fashionable life in London, and got my noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold. It was not correct to wear a ready-made tie, and I learned the art of tying one for myself. तो उन्होंने सूट ले लिया, कपड़े बनवाए, टाई बांधना सीखा, एंड ही हैड अ डबल चेन. तो बाहर से जो अपीयरेंस थी वो सारी उन्होंने अपनी करेक्ट कर ली, एक जो इंग्लिश जेंटलमैन की होती है वैसे ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. एक ख़ास बात, एक
बड़ी अजीब बात है बेटा ये. आई वॉज सरप्राइज्ड टू रीड दिस एंड आई थिंक सो वुड यू. What he says that while in India, the mirror had been a luxury permitted on the days when family barber gave me a shave. कि हिंदुस्तान में जो शीशा है देखने का, लुकिंग जो मिरर है, वो सिर्फ जिस दिन बार्बर आता था कटिंग करने के लिए उस दिन देखने को मिलता था. अदरवाइज द हाउस इटसेल्फ डिडंट हैव एनी मिरर इन इट. कितनी हैरानी की बात है. आज हर घर में आपको शीशा मिलेगा, लेकिन उस टाइम हर घर में शीशा नहीं होता था. तो आप सोचिए कि जो इंडियंस थे वो पर्सनल अपीयरेंस पे कितना ध्यान देते होंगे अपनी. और एक आज का दिन है बेटे, हर घर में, हर बाथरूम में, हर जगह, हमारे फ़ोन में, एवरीवेयर देयर इज़ अ लुकिंग ग्लास मिरर. एंड दिस सेल्फी थिंग इज़ has become a disease kind of, the self importance. All the time you are there, click a pic. So it was strange that mirror was a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave. Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror. Now England there was no problem. I had a huge mirror and I wasted 10 minutes. तो आप सोचिए बेटा कि आप कितने मिनट जो हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी वेस्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ योर मिरर. नाउ माई हेयर वॉज बाय नो मीन सॉफ्ट एंड एवरी डे इट मेंट अ रेगुलर स्ट्रगल विद द ब्रश टू कीप इट इन पोजिशन. ईच टाइम द हैट वॉज पुट ऑन एंड ऑफ द हैंड वुड ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स द हेड टू एडजस्ट द हेयर. तो उनका जो हाथ था वो बार बार ऐसे बालों को एडजस्ट करने के लिए जाता था. एंड not to mention other civilized habits of the hand every now and then operating for the same purpose when sitting in polished society. तो मैंने अब बैठना, polished society में उठना बैठना सीख लिया था. कहते इतना ही काफ़ी नहीं था. as if all this were not enough to make me look the thing. अभी बात बनी नहीं थी. I directed my attention to other details that were supposed to go toward the making of an English gentleman. I was told it was necessary for me to take lessons in dancing, French and elocution. French was not only the language of neighboring France, but it was the lingua franca of continent over which I had desired to travel. तो फ्रेंच सीखना बड़ा ज़रूरी था अगर उस कॉन्टिनेंट में आपने ट्रैवल करना था, और थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए भी ज़रूरी था. I decided to take dancing lesson at a class and paid down £3 as fee for a term. तो क्लास के लिए मैंने £3 जो है वो देने शुरू कर दिए. I must have taken about 6 lessons in 3 weeks, but it was beyond me to achieve anything like rhythmic motion. तो फ्रेंच सीखना शुरू किया, डांसिंग सीखना शुरू किया उन्होंने. 6 लेसन लेने के बाद उनको लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ हूँ. आई एम नॉट मेंट फॉर, आई वॉज नो वेयर नियर दैट rhythmic motion. I could not follow the piano and hence found it impossible to keep time. It was not my cup of tea. What then was I to do? अब मैं क्या करूँ? डांस मुझे नहीं आ रहा है. The recluse in the fable kept a cat to keep off the rats and then a cow to feed the cat with milk. तो वो एक कहानी सुनाते हैं कि recluse यानी left out बंदा जो होता है, इंसान होता है जो अलग थलग रहता है सोसाइटी से. तो उसके घर में चूहे आते हैं तो वो उनके लिए एक बिल्ली पालता है. फिर बिल्ली को दूध पिलाने के लिए वो एक गाय पालता है, और गाय को टेंड करने के लिए वो एक नौकर पालता है. सो द फेबल गोज़ ऑन. तो यही चीज़ गांधी जी के साथ बन रही थी कि उनको एक इंग्लिश जेंटलमैन बनना है. तो पहले कपड़े खरीदे हैं, फिर फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है, फिर डांस के लिए अपने आप को इनरोल किया है. एंड देन ही रियलाइज दैट नो, आई कांट डांस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. सो व्हाट वाज लेफ्ट? He said, my ambition also grew like family of the recluse. I thought I should learn to play the violin in order to cultivate an ear for western music. कि अगर मुझे western music समझना है तो मुझे violin बजाना ज़रूर आना चाहिए. So I invested again £3 in a violin and something more in fees. थोड़ा फीस दिया, थोड़ा violin लेके आया पैसे लगा के. I sought a third teacher to give me lesson in elocution and paid him a preliminary fee of £1. He recommended Bell's Standard Elocutionist as the textbook, which I purchased, and I began with a speech of Pitts. तो मैंने एक बुक भी खरीदी एलोक्यूशनिस्ट बनने के लिए, and I started reading that book. Mr. Bell was the writer.
But Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear and I awoke. So this was the turning point for Gandhi ji. He says I was kind of sleeping. बट दिस ये जो मिस्टर बेल थे, उनकी घंटी मेरे दिमाग में बजी और मैं जैसे कि नींद से जाग उठा. आई हैड नॉट टू स्पेंड अ लाइफ टाइम इन इंग्लैंड. आई रियलाइज एट दैट मोमेंट दैट आई एम नॉट सपोज टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ इन इंग्लैंड. वट देन वॉज द यूज़ ऑफ लर्निंग इलोक्यूशन. तो इलोक्यूशन सीखने का फ़ायदा क्या है जब मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है. एंड हाउ कुड डांसिंग मेक ए जेंटलमैन ऑफ मी. तो डांस सीखने से मैं कैसे जेंटलमैन हो जाऊँगा. How can I be? The violin I could learn in India. इंडिया में भी सीख सकता हूँ. I was a student and ought to go on with my studies. तो सबसे प्राइमरी काम क्या है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, इस स्टडीज़. आई एम ए स्टूडेंट and instead of wasting my time in all such activities, I should pursue my studies. I should work hard in that. I should qualify myself to join the Inns of Court. If my character made a gentleman of me, so much the better. तो जेंटलमैन तो बेटा कैरेक्टर से बनते हैं. अगर आप में कंपैशन है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, आप डिटर्मिनेशन है, आप हार्ड वर्किंग है, आप पंक्चुअल हैं, ऑल दीज थिंग्स मेक्स यू जेंटलमैन. If you can control your anger, if you have patience within you, all these things makes us gentleman or a lady for that matter. So Gandhiji realizes this. He says, if my character made a gentleman of me, so much the better. Otherwise I should forgo the ambition. नहीं तो मुझे ये जो जेंटलमैन बनने का एम्बिशन है ये छोड़ देना चाहिए, ये ख्वाहिश जो है मुझे छोड़ देनी चाहिए. These and similar thoughts possessed me and I expressed them in a letter which I addressed to the elocution teacher. तो मैंने अपने elocution teacher को बताया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, since I am not going to live in England for my entire life, it is of no use to me. Requesting him to excuse me from further lessons. I had taken only 2 or 3. I wrote a similar letter to the dancing teacher and went personally to the violin teacher with a request to dispose of the violin for any price it might fetch. तो मैं पर्सनली गया वायलिन टीचर के पास ताकि वो इस वायलिन को बेच दें जैसा भी प्राइस मिले उस पर. She was rather friendly to me, so I told her how I had discovered that I was pursuing a false idea. Now that was false idea for Gandhi ji. समय रहते वो चेत गए इस बात को कि उनका जो असली काम है जिसके लिए वो इंग्लैंड में आए हैं वो पढ़ना है. इसी तरह से बच्चों, कॉलेज जब आपने ज्वाइन किया है, BA1 के आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो प्राइमरी आपका जो टास्क है, जो आपका एम्बिशन है वो पढ़ाई है. सो परसू योर स्टडीज़, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम. डोंट मेक अदर थिंग्स प्राइमरी एंड योर स्टडीज़ सेकेंडरी. पे योर अटेंशन टू योर स्टडीज़ फर्स्ट एंड देन टू अदर थिंग्स इफ़ यू थिंक दे आर नेसेसरी. Okay, this is what Gandhi ji wants to convey through this chapter, and that's why this chapter has been included in your syllabus. क्योंकि होता क्या है कि हम फैशन में आउटवर्ड अपीयरेंस के परसू करने के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं. तो ये आपके नॉट ओनली फॉर गांधी जी, दिस शुड वर्क एज एन अलार्मिंग बेल फॉर यू टू अवेक यू to the situation that your primary duty is that of a student and you have to study and study hard and study well. So he sold off his violin and she encouraged me in determination to make a complete change. She also encouraged me. This infatuation must have lasted about 3 months. तो गांधी जी कहते हैं कि इस चक्कर में मैंने अपने 3 महीने जो थे वो ख़राब कर दिए. The punctiliousness in dress persisted for a year, but henceforward I became a student. तो कहता कि मैं ड्रेस तो फिर भी उतने ही ध्यान से पहनता था, बट आज के बाद अब के बाद मैं एक स्टूडेंट बन चुका था. So this is also for you kind of lesson, students, that you are students and you have to study. Be a student henceforward, today onwards. I hope the message has been conveyed to you what Gandhiji wanted to say. Thank you very much.